Because in those days, the film industry did not have a reputation, where families wanted their children to go and join. Anyway, I convinced my parents. I told them, please give me 2 years. If I'm not successful in 2 years, I promise you, I will quit the film industry and I will come and join your business. And that was the end of it. They agreed. And then, of course, my whole journey into the film industry began. As an actor, nobody comes born as an actor. Nobody knows, no matter how great a family you come from of acting or film industry, anybody in the film industry. It has to be within you. It has to be something which you really want to do, which you really want to give everything that you've got. Like in any other profession, but this profession especially. And I went on working, and fortunately there were a number of films that came my way after my first release. I was accepted, I was recognized, and I got so many films, one after the other. I played all kinds of roles. I was somebody who knew nothing about the film industry because I had no experience of the film industry. Nobody in my family was in the film industry. And I learned step by step. Every person I met, whether he was a spot boy, whether he was an assistant director, whether he was my producer, my director, anybody who was working in any department, I was always willing to listen and learn from them. And by the grace of God, I must say that one thing paid off in my life. You have to be open, listen to people, observe people, take their advice where, as and when you feel it's correct. But listening is the most important thing in acting, I feel. Anyway, I went through this whole journey for many years. And I came to a point of life where I had achieved everything. I had everything that I wanted, recognition. I had won awards. I had made a lot of money. I had traveled the world. Everything that somebody can hope for, I had got. But yet, something within me kept saying that, no, there is more, there's something that you need to do, which you are not doing. And I could never pinpoint it. And then suddenly, I met my guru. Like he's known as Osho today. In those days, he was known as Rajneesh, Bhagwan Rajneesh. And I went into this path of meditation and spirituality, which was there somewhere inside me for a very, very long time, but it had been, usko daba diya tha maine. I didn't like it to surface because my career, everything else was so important. Anyway, this whole journey started, and I used to have a lot of discontent in my work, with my producers, with my directors, with my story writers, with my co-actors. There used to be a lot of conflict. There used to be a lot of, times where I would go home very dissatisfied with my work. And I could never find out why that is there, because I would really give everything I got into my work. So I spoke to my guru one day, and I'd like to share this with you. I told him this is what is happening with me, that I cannot work with people that I don't agree with. People whose mind and my mind don't think alike. What should I do? Because I come home very dissatisfied. I go home, I can't sleep till very late. So मैं क्या करूं? I think this is something which all of you will face probably tomorrow. So he gave me a very simple answer which I couldn't understand straight away. उन्होंने मुझे कहा कि देखो विनोद, हर आदमी का एक सेल होता है.
हाँ स्पेस होती है जिसमें उसको फंक्शन करना पड़ता है. तो हर किसी का सेल 5x5 है या 7x7 है या 10x10 है, और you're confined in that space. But to feel free of that space, unless you're total 100% in that space with awareness, you will never be able to be satisfied. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जहाँ भी हो, तुम्हें जो भी काम मिलता है, जो भी तुम्हारा डायरेक्टर बोलता है, जो भी तुम्हारा प्रोड्यूसर बोलता है, जितना वाहियात सीन हो, जितना बकवास सीन हो, तुमको बिल्कुल भाता नहीं है, लेकिन तुम वो करो जो वो कह रहे हैं. 100% अपने आप को उसमें डुबो दो. और मुझे लगा कि मैं because the mind is such a thing that there's so much conflict, करूं नहीं करूं, ये questions keep coming, you keep fighting. Anyway, I said, let me try this out, and I started doing this. I used to come on the set, and even if I didn't agree with the scene, I didn't agree with so many things that were happening, whether it was production, it was, I just said, मैं बिल्कुल complain नहीं करूंगा, जो मुझे कहते हैं मैं 100% उसमें डूब जाऊंगा. And I swear, I tell you, that changed my entire outlook towards my work. Once I started doing that, but with awareness, वो सारा गुस्सा मेरे अंदर जो था, वो सारा गायब होना शुरू हो गया. I started loving people, I started accepting him, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारा जो सेल है, उनका भी वही सेल है. अगर तुम्हारा 7x7 का सेल प्रिजन का सेल है, तो उनका भी प्रिजन का सेल है. अगर तुम उनके साथ झगड़ा करोगे, वो भी घर जाएंगे, वो अपनी बीवी से झगड़ा करेगा, बीवी अपने बच्चों से झगड़ा करेगी. And this cycle continues and nobody then is happy. So to be happy, to be satisfied, all you got to do is be 100% in whatever you're doing, no matter how stupid, no matter how much you disagree with it. But do it, but with awareness. ये मैंने करना शुरू किया, and I tell you, my whole life changed. And I started enjoying my work, my people, my friends, my colleagues in the industry so much. Everything became so heavenly, I must say, that everything changed. And then I suddenly realized that, my God, इतनी सिंपल सी चीज़ थी, और उसको समझने के लिए मुझे इतना समय लगा. I don't know it's so easy for you to understand it today also, unless you start doing it. But when this happened to me, my whole life changed. I was content, happy. I was meditating, 6 hours a day whenever I could find time. In between shots, I would close my makeup room and sit down to meditate. And suddenly, I was a very happy man. And then I went to the Guru again, once in Pune, and he asked me, क्या हो रहा? तो I said, भगवान आपने तो कमाल का मुझे फॉर्मूला दे दिया, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, काम कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ में आनंद आता है. तो he smiled at me and he said, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. And the next thing I knew is that after having, so nicely settled with my work, that I just felt that I can't miss this opportunity of not being with my Guru physically. So I just decided that I must quit the film industry and be with him. And that's the time I decided, and I spent a few years, I quit the industry, spent a few years with him, went with him to America, came back, finished my journey, and then I told him when I came back that I want to go back and work in the film industry. I want to go back and be with my friends and family. And he was so happy. He said, yes, now you can go back. And I came back, started my work again, started everything. And that whole journey that I went through, I'm the most grateful person
I will always be indebted to my guru. And of course, gurus are in all your walks of life. You know, your director is your guru, your producer is your guru, your colleagues are your gurus, because you learn from everybody. And that's what I said, you must listen and learn. Because there's an opportunity to learn from everywhere, from everybody. So, I know it's nothing much that I've shared with you. Unfortunately, you know, Subhashji and me never got to work in a film together as a director and actor, but I must tell you that we've shared more of a relationship than that. And but I always looked forward to be directed by Subhashji. It never happened. And I saw his whole journey also. In fact, when I came, नया जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तो मैं एक फिल्म कर रहा था और फिल्म इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लड़के ग्रेजुएट होके आए थे. उनमें से सुभाष जी भी एक थे. And I was working on a set one day and suddenly my director comes and says कि ये सुभाष घाई हैं और ये रोल कर रहे हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर का रोल था, ऐसा कुछ था. And you know, coming from the Film Institute, obviously you've been trained. And Subhashji came and he rattled off this huge passage. Freedom fighter की speech वगैरह थी. मैं तो घबरा गया, मैं तो डर गया, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का डायलॉग सुना नहीं था. लेकिन मुझे उस वक्त लगा कि यार training is so important. You know, coming from a background of training, because when you come, you've been taught to face the camera, you've been taught to, you know, how to deliver your lines, you've been taught all these kind of things. And I was so happy to meet him and to learn about the Film Institute, because मुझे नहीं पता था. उसके बाद immediately I did a film called मेरे अपने, in which the entire Film Institute की gang was there. मैं अकेला था, right from Mr. Shatrughan Sinha, my dearest friend, to Danny, to a whole lot of them who graduated and came. और मैं अकेला एक तरफ होता था और ये पूरी Film Institute एक तरफ होती थी. But we all got on famously. We did a great film. We did very well. So I'm really grateful to everybody who's come into my life and from whom I've learned, from whom I've had the opportunity to learn. And I hope that all of you graduates today will keep all this in mind. And the little that I've said will probably also help you in your journey. So thank you once again for this honor. Thank you once again for this. Because, you know, ultimately, it is these kind of recognitions that make you feel that, yes, your efforts have not gone in vain, that you have made a difference in the world. So thank you very much. I'm in politics, as you know. I've been elected 4 times member of parliament from the same constituency. मुझे politics के बारे में भी कुछ पता नहीं था. मुझे जब ऐसा लगा कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया है, अचीव कर लिया है, सब कुछ कमा लिया है, तो अभी मुझे कुछ वापस करना चाहिए अपने लोगों को, अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को. The only way I felt that you could do that was to work for the people. And no matter what reputation politics has, please let me tell you, I'm in politics. I used to hate politicians. I used to hate politics. But when I came into parliament and when I went into my constituency and I saw the halat of the poor people, the downtrodden, politics gives you the greatest opportunity, the biggest platform to work for the upliftment of the poor. And I'm so grateful to the Almighty, to my party, for giving me this opportunity of working for the people. And believe me, it is very satisfying
when you see the lives of people changing and becoming better. So we should never leave any aspect of life out. That's what my point was. I mean, we all say politics is dirty, politics is this, politics is that. We have all kinds of peoples in all walks of life. But it's up to you. What advantage you take of that situation, of the opportunity given to you, and make the best of it. So I have led a very fruitful, very satisfying life, and I'm grateful to the Almighty, of course, and all my family, colleagues. My family has been the biggest supporter of mine. My wife Kavita is here, my children are here, Sonakshi, Sradda. I've already got 2 sons in the film industry. I think I was the first person who said yes when Akshay told me that he wants to become an actor. I never came in his way. Rahul wanted to be an actor. I never came in his way. There is no business like show business. That's a fact, because I've seen the entire world. I've seen all kinds of professions. I've seen people successful in all kinds of professions. But the satisfaction, the joy, satisfaction, I mean your soul. I think this is the only industry, this is the only kind of profession that gives you the opportunity to find that peace and love in work. So thank you. Enjoy yourself. Enjoy your life. Thank you very much. Thank you so much, Vinod. A commendation for excellence in cinematography goes to Arkadev Mukherjee. Rabia's not here, so... For the Whistling School of Filmmaking, commendation for excellence in screenwriting, that goes to Suchita Ranglani. All right, the last award is photos. Photo call, please. Hosted and they had a really hard time doing the cameras. Really. The noblest and most admirable chairman and founder of Whistling International, Mr. Subhash Rai, beloved President Mrs. Meghna Kaipuri, Honorable Dean Mr. Ravi Gupta, the extremely solicitous head of academics Mr. Rahul Puri, the coolest and the most amiable Mr. Ajay Bijli and Mr. Manmohan Shetty, respected guests and my fellow graduates. I feel extremely honored to be standing here representing the graduating class of 2016. On behalf of the graduates, I would like to thank you all for joining us on this occasion today. I'd like to especially thank my family. Onwards to the future, and dauntlessly so. Yet, bearing in mind what we've learned. My fellow graduates, today, we've gathered here for one last hurrah before some of us move on to studying further and some of us to paying taxes. With our curious little minds, fiercely entering into a new world, almost dreamy-eyed. Not knowing how many deadlines we'd be facing, forget knowing how many we'd actually even meet. Hi, everybody. Oh. First of all, I must tell you what is Maestro Award given by Whistling Woods.
Whistling is celebrating 10th year this year. So Whistling could not exist or could not achieve its achievements until and unless there was a support from the industry. For the last 10 years, so many legends, so many directors, stars, writers, they've been contributing by teaching students for the last 10 years. So Whistling always felt indebted, and they instituted an award by the students and faculty. It's called a Master Award. The 2 awards every year. So this year awards were given to Lataji and Vinodji as an actor, and that is why we are here. So you should know what is Master Award given by Whistling Woods. Now over to our Master Award winner today. It is an honor to us, honor to Institute. Vinodji has always stood by us, and he has been contributing a lot in building up this Whistling Wood. And now over to हाँ जी, क्वेश्चन आंसर्स यू 10 साल पूरे चुके आपके इंस्टीट्यूट को और बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और आपके दो विनोद जी आपके साथ तो क्या कहना चाहेंगे? मैं या अभी मैं हिंदी में बोलना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हिंदुस्तान के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी सिनेमा के सितारों का, निर्देशक का, राइटर्स का, एकेडमिक्स का साथ ना होता तो व्हिस्लिंग वुड्स ना होता। व्हिस्लिंग वुड्स आज 10वें साल में है और इतनी तरक्की पे है कि वर्ल्ड का टॉप 10 बन गया है। इसका जो पूरा श्रेय है वो हमारी इंडस्ट्री को जाता है और विनोद जी और दिलीप कुमार और सब लोगों के जैसे लीजेंड्स जो हैं उनको जाता है। तो ये सक्सेस मेरी नहीं है, ये हमारे इंडस्ट्री की सक्सेस है, हमारे सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस की सक्सेस है, जिन्होंने अपना ज्ञान और अपनी नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को दी। आने वाली जो जनरेशन है, फिल्म मेकर्स हैं, उनको बांटा और उनसे भी कनेक्ट किया। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में जाकर जब उनको मिलते हैं तो एक जान पहचान ऑलरेडी होती है, एक विचार भी आपस में मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने पाई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि टैलेंटेड लोग आपके इंस्टीट्यूट से निकलते हैं और आजकल देखा जाए तो इंडस्ट्री में ज़्यादा करके कोई जैसे कोई एक्टर का लड़का हो या स्टार बन रहा है तो मतलब सब अपने रिलेशन वाले उनके आगे बढ़ रहे हैं तो जो एकदम टैलेंटेड लोग हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। जैसे जो फिल्म फैमिलीज होती हैं उनकी एक प्रिविलेज तो होता है कि वो जैसे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आर्मी का बेटा आर्मी, तो हमारी एक प्रथा भी है और उसमें गुण भी होता है क्योंकि फिल्म फैमिली में जो बच्चा बड़ा होता है उसको बचपन से ही 6 साल की उम्र से ट्रेनिंग मिलती है। वो अपने माता पिता को देखता है, थोड़े जेनेटिक भी लेकर आते हैं, थोड़े जीन्स में आते हैं और फिर वो ट्रेनिंग भी उसके अपने घर में होती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो फिल्म इंडस्ट्री की है कि जब विनोद खन्ना साहब आए तो इनके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, ये बाहर से आए थे। तो जब बाहर से भी बहुत से जब लोग होते हैं, सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है फिल्म इंडस्ट्री की, ये मेरिटोरियस इंडस्ट्री है। यहाँ मेरिट होगी तो आप जीतेंगे, चाहे वो फिल्म के बच्चे हैं, फिल्म वालों के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं। तो कंपटीशन जो है बहुत ओपन है। तो उस ओपन कंपटीशन में कभी बच्चे जीतते हैं, कभी बाहर के लोग जीतते हैं। या शाहरुख जो है वो बाहर से हैं, आमिर खान एक फिल्म फैमिली से हैं, सलमान फिल्म फैमिली से हैं, लेकिन अक्षय कुमार जो हैं वो बाहर से हैं। तो बहुत से ऐसे एक्टर्स आपको मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे। मैं बाहर से हूँ, मैं भी किसी राज कपूर या यश चोपड़ा का बेटा नहीं था। तो मेरिट्स के ऊपर जीतना जो है तो ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ऐसे कितना बड़ा आपके लिए देना, कितना प्राउड मोमेंट है सर आज के लिए कि पूरे 10 साल अपनी जर्नी में? आज आप सोचिए कि कितना बड़ा मोमेंट होगा हमारा कि जो हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या फिल्म इंडस्ट्री से जो पाया वो हमने फिल्म इंडस्ट्री को दिया। 35 साल के कैरियर के बाद, इतनी फिल्में बनाने के बाद 20 फिल्में मैंने डायरेक्ट की और 20 हमने प्रोड्यूस की। उसके बाद जितने भी हमारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, जो भी धन, यश था वो फिल्म इंस्टीट्यूट में बांटा, व्हिस्लिंग वुड्स में दिया और उसको व्हिस्लिंग वुड्स को खड़ा करने में और उसको आगे बढ़ाने में मेघना गाईपुरी का, राहुलपुरी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसको नेक्स्ट जनरेशन ही संभाल सकती है। हम तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, काम तो उन्होंने ही करना है, एग्जीक्यूट भी उन्होंने करना है, आगे भी उन्होंने बढ़ाना है। तो आज बहुत खुशी है कि आज 10वां साल है हमारा, 10th ईयर में एंटर कर रहे हैं और हमारे बच्चे जितने भी बाहर गए हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में एक बड़े बड़े ओहदे पर हैं। बाकी रही बात एक्टर्स की और स्टार्स की, स्टार्स को भी एक कंपटीशन होता है, उसको हर एक को टाइम लगता है, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, तो वो लगेगा और आपके सामने वो आएंगे। राजेश खन्ना हमारे मित्र थे, विनोद जी के भी मित्र थे, आज हम उनको मिस करते हैं।
राजेश खन्ना ने जो करिश्मा अपना क्रिएट किया था 25 साल तक, एक उनकी जो इनिंग उन्होंने प्ले की, एक बहुत खूबसूरत इनिंग थी। उनका जो सुपर स्टारडम जो पहला एक फ्रेंजी जो पैदा हुई थी, वो फ्रेंजी राजेश खन्ना ने क्रिएट की थी। और आज हमको डेफिनेटली मिस करते हैं, इंडस्ट्री को याद करती है, हम उनका सम्मान करते थे और करते हैं। सर एज अ डायरेक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो स्टॉकिंग चीज़ होती है, जो बहुत सारे फिल्म स्टार वो एक्नॉलेज करते हैं कि यार स्टॉकिंग लुक्स गुड ऑन स्क्रीन, तो इसकी जो रियल लाइफ में बहुत कंसिक्वेंसेस जो हम देख रहे हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन ये टॉपिक जरा सोशल इशू है, पहले हम लोग विस्लवुड्स की बात कर लें, विनोद जी ने बात करनी है। जो टॉपिक है चलेगा, ये भाग 2 में आएगा, है ना, फिर भाग 3 में गॉसिप आएगा, है ना। अभी जरा इसकी बात करते हैं, 3 भाग में बांट लेते हैं। आप मुझे मालूम है लास्ट क्वेश्चन की वेट कर रहे हैं, ओके। हाँ विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपके टाइम पे जो फिल्म इंडस्ट्री थी और अब जो इतना चेंजेस आया फिल्म इंडस्ट्री विनोद जी, तो मतलब कितना चेंजेस आपको लगता है इंडस्ट्री में? जैसे अभी कोई हम एक्टर को देखें, अगर कोई एक्टर है मूवी में कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई हीरोइन को रोड पे चल रहा है और छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर परेशान कर रहा है, फिर बाद में वो मान जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक टीनेजर के दिमाग पे ऐसा एक बैठ जाता है कि हाँ जो हीरो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और वो वही करता है, और आप जो लोग पहले करते थे आज के टाइम पे वो बहुत कल्चरल और ट्रेडिशनल वाला था इंडस्ट्री, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? आई डोंट थिंक इस पर कोई कमेंट देने की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन जनरेशन टू जनरेशन, एज द जनरेशन इन्वॉल्व। पहले सीटी बजाना बस ओके, आज सीटी बजाओ तो जेल में जाओगे यार। आई मीन see we were brought up in a time where these were aspects of growing up, teasing girls, सीटी बजाना, you know, the whole thing of the Krishna theory. अभी वो राम के रूप में Yeah. Now everything is different. So every generation goes through a certain change, and it's for the good. I think everything is evolution basically. और आपको ये समझना चाहिए, बाकी गुड एंड बैड इज द सेम इन एवरीबडी। सबको पता है क्या ठीक है, सबको पता है क्या गलत है, करेक्ट? ऐसी कोई बात, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी हु डजंट नो दैट। और सिनेमा जो है वो हमेशा अपने जो उस काल का, उस वर्तमान काल का दर्पण होता है, रिफ्लेक्शन। उस तरह से जो 1940 के जो यंगस्टर थे वो अलग थे, वो देशभक्ति वाले थे, फिर 60 वाले वो शादी वाले थे, 80 वाले रोमांटिक वाले थे, अभी एग्रेसिव वाले हैं, अभी तो 2-3 गर्लफ्रेंड भी रख के स्टोरी बनाते हैं, लाइफ में भी ऐसे। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो जनरेशन है उसका वही जनरेशन स्क्रीन पर आती है, तो देखने वाले भी जवान, बनाने वाले भी जवान और कहानी भी जवान, आपने समय क्या लो। इसलिए समय का बदला तो सिनेमा तो नहीं बदलेगा, सिनेमा वैसे ही बदलेगा, लेकिन आज का जो पिता है, जैसे आज का पिता रो रहा है, आप फिल्मों में भी देख रहे हैं, पिता उतना ही रो रहा है जितना रोना चाहिए। आपको लगता है आगे चलने की अपने कल्चर ट्रेडिशन आगे क्या मैं बोलूं? एक बात कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट विस्लिंग वुड्स में जो हमारी ट्रेनिंग में हम ट्राई करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं इन बातों पे, चाहे वो जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स हों, चाहे वो कैसे आप एक मुद्दे को लेके, एक सोशल इशू को लेके आप सेंसिटिवली उसको कैसे बता सकते हैं। तो ये जो है उनकी ट्रेनिंग का एक 3 साल में उनको हर टाइम वो ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो मेरा होप है कि ये बच्चे भी आके सोसाइटी की ही पिक्चरें बताएंगे, उनकी मतलब फिल्मों की स्टोरीज़ वही होंगी, बट येस वो सोशली रिस्पॉन्सिबली वे में भी दिखाई जाएंगी। तो आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर। क्योंकि मेघना जो है बहुत वर्कशॉप लेती हैं, चाहे वो वुमेन रिस्पेक्ट की हों, ह्यूमन रिस्पेक्ट की हों, डिप्राइव्ड लोगों की हों, पुअर की हों, हैंडीकैप की हों, तो इनकी काफ़ी वर्कशॉप सोशल भी रहती हैं, ताकि हमारे बच्चों को एनजीओज में काम करवाते हम हैं NGO ताकि में उनको उनको काम पता कराते चले कि हाउ डू पीपल लिव इन दीज सोसाइटीज़, हाउ विल दे बिकम फिल्म मेकर्स। वो स्टोरीज़ कैसे बताएंगे उनके बारे में अगर वो विलेज में जाके काम नहीं करेंगे तो ये स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपोजर मिलता है रियलिटी का, और यही बेनिफिट है फिल्म स्कूल में आने का। आप कहीं भी कुछ भी बन सकते हैं, बट अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो तो आपको अच्छे वैल्यूज़ मिलते हैं। और वैल्यूज़ का कितना अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, बात करते हैं। सॉरी, सर कितना एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके के इवेंट्स आते हैं, तो उसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मिल के आपको क्या लगता है? नहीं, स्टूडेंट्स को तो अभी मैं 2-2 मिनट के लिए मिला, आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सचेंज विद अपना स्टूडेंट देम, बट बट जब आप स्टूडेंट थे, हाँ नेचुरली, आई मीन ऑल दिस सेरेमनीज जो होती हैं, कॉन्वोकेशन हो, ग्रेजुएशन हो, ये है, ये सब आपको याद दिलाती हैं अपने टाइम की, बट वी ऑल वेंट थ्रू डिफरेंट
systems, different times, different teachers, different thinking, different conditioning. So, but what I see, the faces of the students, जो मैंने देखा आज, they're also excited, they're also, beaming with joy. Confidence levels उनका हमारे वक्त से बहुत ज़्यादा है. Even जब लोग फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से ग्रेजुएट होके आते थे, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, एक्टर्स हों, these students are much more confident than those students also. Because internet has opened up, information has opened up, so much thing has opened up. There's so much available. I mean, they don't just have to learn from a teacher, they can learn from anybody on the net. There's so many talks, there are so many this. So the world is open. हमारे ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था. हमारे ज़माने में अगर हमारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता था स्टूडियो में, तो उनको बोलना पड़ता था कि 1:15 पे फ़ोन करो और तब मैं फ़ोन के पास आऊँगा. तो एक ही फ़ोन होती थी स्टूडियो में और लाइन लगी रहती थी फ़ोन करने वालों की और फ़ोन रिसीव करने वालों की. And can you imagine today, mobile phone? I mean, there's communication. I mean, you had to, those were very hard times nowadays, very hard times. Garmi, no air conditioned studios, the infrastructure that we had, the way we used to travel, God. Hotels इस तरह की थी. आजकल तो आप तो जन्नत में आजकल, I think all the actors. Memories of my school days. See, my memory, to sum it up, I was always very confident of achieving anything that whenever I put my mind to something, I knew that I could do it. I wanted to be totally fearless, no fear of anything. Whether it was your parents, teachers, whether it was your colleagues. And that got me into a lot of trouble also. But at the same time, it made me so, confident and absolutely self-independent of anybody. So उस तरह से I think, but everybody goes through life in his own way. I've been very special. I've been very grateful that I've lived such a life that I think very few people can even dream of living. And सर जिस तरीके से आज के टाइम में सर बायोपिक्स का जो ट्रेंड चल रहा है, तो सर आपको लगता है सर किसी तरीके से आर.डी. बर्मन सर के ऊपर कोई बायोपिक बननी चाहिए? आपकी आवाज़ एको हो रही है, मेरे को सुनाई नहीं. आर.डी. बर्मन के ऊपर बायोपिक बननी चाहिए. यस, बननी चाहिए. आर.डी. बर्मन, ऑफ कोर्स, माय गॉड, ही वाज सच अ जीनियस. बन रही है ना, कोई बना रहा है था. ऑफ कोर्स. आपके हिसाब से सर मोस्ट सूटेबल एक्टर कौन सा होगा अगर आप क्या फैक्टर? Suitable actor to act as. Sorry, I'm not a casting director. I'm not a casting director. सर जैसे हम देखें आपके टाइम पे जब फिल्में बनती थी तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होती थी गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से किसी से भी, मतलब फिल्म को रिलीज करने में. आज के टाइम पे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि मूवी लीक्स हो रही है टोरेंट साइट्स पे और सेंसर बोर्ड कॉपी निकल रही है. मतलब प्रोड्यूसर के मतलब what do you want to say about that? No, I agree. I mean, there will always be, some thief तो हमेशा ही जिंदा थे, हमेशा रहे. You see, everything. चोर जो था पहले भी होता था, 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, वो अपना तरीका निकाल लेगा. अगर आप बोलेंगे चोरों को रोक सकते हैं तो नहीं रोक सकते. पर ये 1%, 2%, 1%, 5% नहीं रहता है. 90% चोर नहीं है. 90% लोग फिल्म देखने वाले तरीके से ही फिल्म देखते हैं. आपके हिसाब से कौन लीकेज पहले भी कॉपी के मतलब वीडियो जो आ रहा है वो पूरा लीक अब इसके बारे में तो हम टिप्पणी कर नहीं सकते क्योंकि हमें केस नहीं मालूम है. लेकिन ये है कि लीकेज होना, पायरेसी होना, ये हमेशा शुरू से ही हमारी प्रॉब्लम रही है. But we must accept this fact कि before the Vajpayee ji government came into being, film industry was not recognized as an industry. हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को कोई दात नहीं देता था, कोई उनका ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होता था. जब भी कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट पे आता था उन दिनों में तो इनकम टैक्स रेट्स हो जाते थे एक्टर्स पे और हेडलाइंस सब हो जाते थे कि इसको रेट कर दिया, उसको रेट कर दिया. जो भी खामियां गवर्नमेंट में होती थी,
फर्स्ट टाइम वाजपेयी जी, अडवाणी जी रिकग्नाइज द फिल्म इंडस्ट्री, हमको इंडस्ट्री का स्टेटस मिला, हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसे मिलने शुरू हुए टू फाइनेंस फिल्म्स. सो दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप दैट दे टुक. और Btown was the first corporate company because industry recognized की गई थी. So that was the start of this whole revolution. I think that changed this whole film industry. Finance, money. वो पहले सारा money underworld इधर उधर कहाँ से आता था पता. Now everything is legal. We are accepted as any other industry. That insurance for films, I think things have changed a lot. If you talk about then and now, yes, they had other challenges. Like he said, there was no air conditioning in the studios. Today we may have air conditioning, but then there's technology for piracy to happen more easily. So I think we must accept that life is always going to be a balance between good times and bad times, and we have to face these challenges. This generation has to face these challenges. So I think that's summing it up. सुभाष जी, खलनायक का सीक्वल देखने मिलेगा हमें? खलनायक रिटर्न्स काफी चर्चा में. मैं इस वक्त बिल्कुल विस्लिंग वुड्स के 10th ईयर के कन्वोकेशन में बैठा. एक मुलाकात फिर करेंगे जब हम खलनायक की बात करेंगे. लेकिन काफी चर्चा और खुल के बात करेंगे. मैं 2 घंटा बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you. Stand up. They just want to take a. All the best and thank you for coming. Thank you. Thank you.